So good morning all of you. Today we are going to start with a chapter called as I can say nature of chemical bond. Nature of chemical bond. जो बॉन्डिंग का कंसेप्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड तुम लोग के दिमाग में था उसको मैं ब्लो करने वाला. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, बहुत सारे नए कंसेप्ट क्योंकि हम लोगों ने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा ना, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो अपना क्या बोलते हैं इसको थॉट है अबाउट द एटम वो चेंज हो गया है ना. तो बस उसको ही तो उसको ही लाइन में रख के हम लोग बहुत सारे नई चीजें पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में. पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस. मतलब केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने अलग अलग कंसेप्ट कैसे दिए. ओके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद सिंस वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल कंसेप्ट. So how that orbital concept is useful in determining the shape of the molecule, geometry of the molecule, stability of the molecule, energy associated with the molecule. ये सब फैक्टर्स वहां पे आएंगे, समझ रहे हो. एंड लास्ट में हम लोग एक ऐसी मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है. सी केमिस्ट्री में जो भी चीजें इंट्रोड्यूस होती है दे आर ऑल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड. तो वो फैक्ट्स होते हैं. वहां पे कुछ इमेजिनरी चीजें मतलब इमेजिनरी चीजें हम लोग बोलते हैं बट उसके पीछे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की भी जरूरत होती है. तो उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, ठीक है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग वापस नए तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो आई होप दिस विल गिव यू मतलब ये चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा रहेगा उतना तुम लोग का 3 चैप्टर 11th में एज वेल एज इन 12th एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन ये भी चैप्टर्स तुम लोग को समझ में आए. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय chemical bond. A chemical bond is nothing but the force of attraction. Chemical bond is nothing but what? A force of attraction between the two atoms to form a stable molecule. Or I'll say the force that binds the atoms in a molecule is called as chemical bond. Please write down the definition. केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन लिख लो. The force that binds the atom in a molecule is called as
chemical bond. It's called as chemical bond. Now, why there is a formation of chemical bond? What is the necessity? The first one is to attain stability. To attain stability, मतलब देखो क्या होता है. So I want to explain you. Attain stability का मतलब समझाता हूँ. Why is chemical bond formed? So first reason है energy. So whenever there is a formation of bond, force of attraction increases and force of repulsion decreases. Force of attraction increase होगा और force of repulsion क्या होगा? Decrease होगा. Now because of this, what will happen? The energy, the potential energy goes on decreasing. Okay, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ force of attraction क्या होगा? Increase होगा and therefore potential energy क्या होगा? Decrease होगा. और जब एनर्जी डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है. स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. केमिस्ट्री में ये याद रखना. whenever energy decreases, stability increases. Now I can explain this with the help of formation of hydrogen bond, hydrogen molecule. I'm sorry, formation of hydrogen molecule. Okay, let us draw one graph. हाँ, सब लोग ध्यान दो. किसी को अगर डाउट है तो पूछो. हाँ, anybody having any doubt in gas law problems? Nobody is saying anything. Yes, अगर है तो कल पूछना. So this is potential energy and this is called as distance between two atoms, D. So PE stand for potential energy and D stand for distance between two atoms. Okay, let us consider this is a infinite distance. ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है इनफाइनाइट डिस्टेंस. हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या? दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. नाउ सिंस दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर, उनका पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है. ओके, ये होता है पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव और ये हो गया जीरो. नाउ जैसे जैसे वो एटम्स नजदीक आना चालू हो जाएंगे, अप्रोचेस टुगेदर, मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस ये दोनों के बीच में आ गया, तो एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. when they are very close, तो मतलब क्यों एनर्जी डिक्रीज हो गया? बिकॉज देयर इज अ इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. समझ रहे हो? तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ देखो ऐसे होगा. इट गोज ऑन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग. जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे. जब वो डिस्टेंस मतलब जब एक टाइम पे वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं. पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में आगे जाके.
अभी ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम डिस्टेंस? मतलब इससे मतलब अगर दूर गए तो एनर्जी बढ़ेगा, और इससे और नजदीक आ गए तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा. रिपल्शन मतलब इंक्रीज इन एनर्जी. मतलब ये एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, जिसके आगे अगर मैं जाऊं, मतलब और अंदर जाऊं, तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ते जाएगा. और अगर दूर जाओ तो भी एनर्जी बढ़ेगा. मतलब ये एक मिनिमम एनर्जी है at which the nuclei, these two atoms are held together. समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस है, that distance is called as a bond length. That distance is called as bond length. मतलब it is an equilibrium distance at which the force of attraction is balanced by force of repulsion. Bond length का definition क्या होगा? It is the equilibrium distance between the nuclei of two atoms. Okay, where the force of attraction is equal to force of repulsion. मतलब उससे थोड़ा दूर गए तो भी एनर्जी बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम हो गया. उससे थोड़ा और नजदीक आ गए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा. राइट? तो अगर मैं और नजदीक लेके आया उनको, और नजदीक लेके आया, ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और इसलिए ये एनर्जी गोज ऑन इंक्रीज. और अगर वो हो और ज्यादा नजदीक आ गए तो इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि वो एक दूसरे को दूर फेंक देंगे. मतलब बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा. देखो यहां से यहां तक जो पार्ट है ना, वो रियल है, और इसके आगे क्या है? इमेजिनरी पार्ट. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा? सो पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है? क्यों बॉन्ड फॉर्म हो गया? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन balances the force of repulsion. This minimum energy, ये जो minimum energy है, that energy is called as bond energy. Understood? Okay? तो पहले ये लिख लो, फिर मैं दोनों डेफिनेशन तुम लोग को देता हूँ. बॉन्ड लेंथ का भी देता हूँ, बॉन्ड एनर्जी का भी देता हूँ. लिखो.
Yes, done everybody? हो गया सबका? Yes, sir. Okay. So write down two definitions. First one is bond length. Bond length का definition लिखो. The equilibrium distance between the two atoms. Equilibrium distance between the two atoms equilibrium distance between the two atoms at which force of attraction is balanced by force of repulsion. Force of attraction is balanced by force of repulsion. Sir, can you repeat? Yes. The equilibrium distance, I will write here. Bond length. क्या है? Equilibrium distance between two atoms at which force of attraction is balanced by force of repulsion. Is called as bond length. Called as bond length. Next one is bond energy. Energy required to break a bond between two atoms in a molecule of 1 mole of substance is called as bond energy. तो ये एक फैक्टर हो गया. कौन सा फैक्टर हो गया? What is the first factor we discussed? Energy. Now, the second approach is Cossel and Lewis approach. Okay.
So what is the Cossel and Lewis approach? It was observed that ये हो गया ना, लिख के सबका हो गया, everybody done? So it was studied that the inert gas element do not form compounds. Now why they are not forming compound? Because they have a stable electronic configuration. Okay, this is due to stable electronic configuration. Now what do you mean by stable electronic configuration? That these elements have 8 electrons in their valence shell. Okay, all these elements except helium, all these elements have 8 electrons in their valence shell, right? In helium it is 2 electrons. Okay, so it was observed that when any other element form a compound, it tried to attain that inert gas electronic configuration. Okay, so for other elements, I'll say this way, in other elements, okay, they try to attain inert gas electronic configuration. So how is it possible? It is possible by losing or by gaining or by sharing electron. It is possible by losing or by gaining or by sharing electron. मतलब ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, राइट? वेरी सिंपल, एक बहुत सिंपल तरीका है केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं. फॉर एग्जांपल अभी देखो सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281 ना पुराना वाला. तो अगर उसका Na प्लस बना मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 28. क्लोरीन देखो 287, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या होगा 2Cl माइनस बना है ना, Cl माइनस बना तो 288 बना, right? So now that Na plus which has 2 and 8 complete octet plus Cl minus 288 complete octet forms what? Na plus and Cl minus. है कि नहीं? इतना सिंपल था वो कंसेप्ट. अंडरस्टूड? सो ये दूसरा रीजन है. फर्स्ट रीजन क्या बताया था मैंने? व्हाट इज द सेकंड? फर्स्ट रीजन एनर्जी था. सेकंड रीजन क्या था? बाय अटेनिंग व्हाट? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, राइट डाउन. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये मैं पहले ही बता दूं. लिख लो ये.
Vedant, the elements of hydrogen, helium, lithium also in that case, beryllium, boron. Okay, so these elements try to attain the stable electronic configuration of helium. Okay, while other elements try to attain the electronic configuration of nearest inert gas, like carbon, nitrogen, oxygen, try to attain the electronic configuration of neon. See, I can say this way. This is very basic or the generalization statement. Okay, as we proceed, you will find this is also not the criteria to form a chemical bond. The formation of chemical bond take place only because of energy. ये याद रखना. बाकी जितने भी फैक्टर्स है ना, वो उसमें फिर मैटर नहीं करते. ओके, give me 2 minutes. हाँ, अभी just put the next heading. Types of bonds. Just put the heading types of bond. Okay. So अपने टेक्स्ट बुक में भी ऐसे नहीं दिया गया है. Again I am telling you, but I am covering almost everything. So टेक्स्ट बुक पहले रीड करना हमेशा. The first one is interatomic bond. इसको मैं बोलता हूँ primary bonds. Primary bonds, which are also called as interatomic bonds. Interatomic bonds.
and there are always strong bonds. Okay, the bonds between the atoms are maybe ionic bond, then we have covalent bond, covalent bond. Next one is coordinate bond, coordinate bond, and the last one is metallic bond. Okay. Next type of a bond, which I call it as a secondary bond. ये हम लोगों ने किया है गैस लॉज में. सेकेंडरी बॉन्ड, जिनको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड. Intermolecular bond. So these are nothing but bonds between the molecules. तो उसको मैं जनरलाइज करता हूं ऐसे, वैंडर वॉल बॉन्ड. ओके, वैंडर वॉल बॉन्ड. और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ऑलरेडी. किसमें? स्टेट्स ऑफ मैटर. राइट. ओके, सो वन बाय वन हम लोग अभी पहले डिस्कस करेंगे हर एक बॉन्ड को, और थोड़ा उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे. कोवैलेंट बॉन्ड इज अवर मेन फोकस इन दिस चैप्टर. ओके, क्या रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड अपना फोकस रहेगा. शुरुआत करते हैं हम लोग. फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड. जस्ट पुट दैट इन आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड. अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड? रणवी? Sir, it's the kind of bond in which one electropositive element gives an electron to an electronegative element. ओके, और कोई दूसरा? Bonding between a metal and non-metal. ओके, और कोई? एनी अदर फेलो? यस, पटेल. No, sir, I don't know. Ionic bond formed due to transfer of electrons is known as ionic bond. Okay, bond formed due to transfer of electrons is known as ionic bond. Okay, so when I said transfer, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? So I have given you the example. I'll take another example. Suppose we have a Mg. Okay, so that Mg gives you what? Mg2 plus 2 electrons. ये magnesium ion है. O plus 2 electron gives you what? O2 minus. Now the attraction between Mg2 plus and O2 minus is the electrostatic force of attraction, so that there is a formation of what? Ionic bond. Okay, so I'll say force of electrostatic force of attraction. What? Electrostatic force of attraction between cation and anion is called as ionic bond.
Okay, write down this part. So ionic bond is always formed between different elements. As Axel said, it is always formed between metal and non-metal. Okay. So here I am writing few points. First point is ionic bond is always formed between different elements. Different elements. Okay. So a metal used to combine with non-metal, and that gives you ionic compound. Now what do you mean by ionic compound? A compound which is formed because of ionic bond is called as ionic compound, or a compound containing ionic bonds called as ionic compound. Okay, so elements like group 1, lithium, sodium, potassium, रुबिडियम, सीजियम. फ्रांशियम में पर्पसली नहीं ले रहा हूं बिकॉज वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी, हियर आई एम राइटिंग व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी? सो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम. इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स donated or accepted by an atom. तो अभी जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 एलिमेंट्स वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, इसलिए इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? 1. अगर मैं ग्रुप 3 के बारे में बात करूं, सॉरी ग्रुप 2 के बारे में बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगेन रेडियम इज रेडियो एक्टिव, सो उसका केमिकल रिएक्टिविटी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसलिए उसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? 2.
अगर मैं ग्रुप 13 के बारे में बात करूं तो उसमें है एल्यूमिनियम एंड गैलियम, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है 3। सो बाकी एलिमेंट्स का वेट, विल सी दैट लेटर ऑन। अभी फिलहाल तो मैं जो दे रहा हूं उसको समझ लो। मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 13 में, उसमें एल्यूमिनियम और गैलियम जनरली फॉर्म व्हाट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं, राइट ना। सो हियर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और अगर मैं बात करूं ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को मैं नहीं ले रहा हूं, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है 3। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 16 के बारे में बात करूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है 2। और अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है 1। यहाँ पे क्या आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो कोई तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन का वही तो कंसेप्ट है। प्लीज राइट डाउन दिस पार्ट। ये लास्ट वाला सेंटेंस मैंने लिखा है, उसको समझो।
नो प्रॉब्लम हमें. Yes, done everybody. Hello, done? Done, sir. Done, sir. Okay, good. Wait. Okay. Done, sir. More is the electronegativity difference between the two atoms. More will be the ionic characters in the bond. So I'll say this way. Ionic characters in a bond is directly proportional to difference in electronegativity. Delta En stand for what? Difference in electronegativities of two atoms which are ionically bonded or which have a ionic bonding. So ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. Arrange the following. Arrange the following in increasing order of ionic characters. अगर समझो ऐसा क्वेश्चन है तो समझो पहला ऑप्शन मैंने लिखा है NaF, LiF, CSF, KF, KF और RBF. तो will able to write? हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा. अभी देखो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अल्कली मेटल्स में मतलब एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? कौन बताएगा मुझे? यस, इंक्रीज होता है. हाँ इंक्रीजेस. हाँ श्योर. एज वी मूव डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? छवि कुछ याद है? मुझे लगता है ना अभी तुम लोग का टेस्ट ना ऐसे कंबाइन लेना पड़ेगा. Decreases. डिक्रीजेस होता है पक्का? कौमुदी चेक कर. यस योगिता, व्हाट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? What is the electronegativity order for alkali metals? Lithium is greater than sodium, is greater than potassium, is greater than rubidium, cesium. So सबसे ज्यादा आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में रहेगा? CS और फ्लोरीन के बीच में रहेगा. तो इसका मतलब LiF then NaF then
KF, then CSF, then RBF. अंडरस्टूड? चलो अभी ये तुम लोग करो, ये मैं नहीं बताऊंगा. इसका आंसर तुम लोग बताओ मुझे. Put your answers in a chat box. Yes, everybody understood now? As we move down the group, electronegativity decreases. As we move across the period, electronegativity increases. Okay? करो अभी. सर बोलना. फर्स्ट वाले में लास्ट दो ऑप्शन उल्टा नहीं होगा? तुझे लिखना है वो. बस दो वाले में मतलब मैं समझा नहीं. NF, LIF, CSF, KF, RBF का जो आंसर है उसमें RBF और के बाद CSF आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा. CSF सबसे लास्ट में आएगा. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. बराबर. यहाँ पे RBF चाहिए, यहाँ पे CSF. करेक्ट करेक्ट. थैंक यू. प्रिंटिंग मिस्टेक था वो. अथर्व भाऊ, काहीतरी चुकलं तुमचं. अथर्व काजवे, काहीतरी चुकलं. जरा बघ, परत चेक कर. मेदराज करेक्ट है, कमुदी करेक्ट है, श्रुति करेक्ट है. अथर्व राऊत आंसर. पुष्कर, पुष्कर काहीतरी चुकलंय बघ, चेक कर. नाही, मेदराज चुकलंय काहीतरी, चेक कर. आयनिक, हा बरोबर बरोबर बरोबर. नाही रे, पण नाही, चुकलंच आहे मेदराज. ते BaCl2 वाला चुकलंय.
सर यस बोल. सर पण बेरियम सगळ्यात खाली आहे ना. काय म्हणते? बेरियम सगळ्यात खाली आहे ना पिरियड 2 मध्ये. आन्सर टाकलेलं जाता. हा, मग त्याचे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सगळ्यात कमी असणार ना. हा, तर मी पण तेच टाकलं सगळ्यात कमी वाला. मेदराज ना, हा. तू टाकलायस BaCl2 इज लेस दॅन CaCl. जेवढा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स असणार. सी, बेरियमचे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी आहे, क्लोरीनची जास्त आहे. हा. So the difference is less where? अच्छा, आयोनिक कॅरेक्टर. हा सर, कळलं समजलं? कळलं कळलं. Uh, yes, Mrunmayee correct. श्रुती हे मध्येच एमची. श्रुती चुकलंय थर्ड. चेक कर, काहीतरी गडबड झाली. अमी 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 सही है, करेक्ट. यस, करेक्ट. सान्वी, अथर्व बरोबर. अथर्व चुकलंय तुझं रे. सेकंड तुला समजलं नाही बहुतेक अजून. वेदांत, अच्छा ठीक है, ओके. हाँ, एनीबडी हु इज नॉट गेटिंग? यस नील, करेक्ट. अरे BaCl2 बीच में कैसे आ गया नील? चेक करना एक बार. अरे संस्कार, तू पण. प्रतीक, छवि, प्रतीक, रोहन, आंसर. विराज, बेटा विराज, यस सर. क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है. तो chalo, so I am giving you the answers now, just listen carefully. So answer for this, electronegativity of fluorine is greater than that of the chlorine, is greater than that of the bromine, is greater than that of the iodine.
Therefore, ionic characters will be NaI is less than NaBr, it's less than NaCl, it's less than NaF. Okay. What about here? Electronegativity of beryllium is greater than magnesium, is greater than calcium, is greater than barium, right? So here it should be BaCl2 is less than CaCl2 is less than MgCl2 is less than Be. Oh, I'm sorry, I made a mistake. I'm extremely sorry. BaCl2 is more ionic than CaCl2, than MgCl2, than BeCl. While in this case, NaF is more ionic. No. Correct. Than MgF. Yes. Why? Because electronegativity of magnesium is greater than that of the soda. Okay. So anybody having any doubt over here? Anybody having any objection over here? Yes. Sir, Hold na. sir, electronegativity decreases down the group, right? Correct. So in the third question, BeCl2 should be more, right? No, no. See, the electronegativity decreases, na? So the difference between electronegativity we have to consider. Are you getting my point? See, electronegativity of barium is less. That means the difference between electronegativity of barium and chlorine is maximum. Yes, sir. Delta electronegativity order is what? This way. Correct? Yes, sir. Therefore, ionic characters is like this way. Okay, sir. Understood? Yes, sir. So many of you made a mistake. You are not considering, see, it's a difference in electronegativity, not the electronegativity. Remember that. So I think in the fourth also many of you made a mistake. Okay, so magnesium is more electronegative. So many of you have written MgF2 is more ionic than NaF, but that is wrong. Because what is the difference in electronegativity? So difference in electronegativity of MgF2 is less than that of the NaF, and therefore the ionic character. Okay. Yeah, please do the correction. Those who made a mistake and those who are not understood, ask. Vatsal, समझा? हाँ सर. प्रतीक. Good. अथर्व राउत आहे का? Yes, अथर्व राउत. Yes, sir. Understood. तू ना आन्सर पाठवलं मला. हो सर, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. समजलं का पण? हो. चलो, let us, should we move ahead? Have you written? संस्कार. हो सर. कोण झालं? हो.
चलो नेक्स्ट वन, एनर्जी टर्म। Involved in the formation of ionic bond. देखो कौन से एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व है, ये पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहला ये है, समझो ये m गैस है, ये m गैस को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, m प्लस गैस में, प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इस एनर्जी को? व्हाट इज दिस एनर्जी कॉल्ड एट? क्या बोलते हैं इसको, बोलो जरा। We studied this. Come on, fast, guys. Ami. Vedika. What is this called as? The energy required for this process is called as Ranmai. अरे कोणच नाही सांगत. सोहम. वेदांत पांडोस्कर. एवढ्या जणांची नावं घेतली, एकाने तरी आन्सर करा. Yes, very good. So this energy is called as ionization enthalpy. Okay, this energy is called as ionization enthalpy. ये होता है एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब हीट इज एब्जॉर्ब. अच्छा, फिर दूसरा देखो, X गैस plus electron gives you X minus gas. What is this called as? Electron gain enthalpy. और ये होता है minus Q dash kilojoule per mole. This is called as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी जो सोडियम क्लोराइड होता है वो गैस होता है या सॉलिड होता है? सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है ना? तो इसका मतलब ये गैसियस कटायन गैसियस अनायन के साथ कंबाइन होके मुझे mx सॉलिड, मतलब इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है. Now this energy is called as lattice enthalpy. क्या बोलते हैं इसको? Lattice enthalpy. और ये भी होता है minus Q1 kilojoule per mole. Okay, this is called as lattice enthalpy. तो ये तीन टर्म यहाँ पे जरूरी है. So what is the favorable condition for the formation of ionic compound? So here I am writing favorable conditions. Favorable conditions for the formation of ionic compound. क्या होना चाहिए? याद रखना है इसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होना चाहिए.
सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू लार्ज होना चाहिए, एंड थर्ड वन, लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू भी लार्ज होना चाहिए। लिख लो ये सब कुछ। पहले दो के डेफिनेशंस तुम लोग को पता है, इसलिए मैं वो डेफिनेशंस नहीं दे रहा हूं, बाद में मैं लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन तुम लोग को देता हूं, अब ये पहले लिख लो। When I put a plus sign, which means the energy is absorbed. Okay. When I put a plus sign, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एनर्जी इज एब्सॉर्ब। और जब भी माइनस साइन होता है, इसका मतलब एनर्जी इज लिबरेटेड, इवॉल्व, बाहर निकल गई, एनर्जी इज इवॉल्व। ठीक है, चलो चलो डिटर्मिनेशन ऑफ ये देखते हैं। दो डेफिनेशंस तुम लोग को अभी ले रहा हूं, एक है लैटिस एनर्जी। सर वेट, हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो।
Yes, done. Yes, sir. So write down definition of lattice enthalpy. Write down definition of lattice enthalpy. Everybody can hear me? Yes? और ये मैं लिखूं, लिखता हूं मैं, बीच बीच में नेटवर्क की वजह से आवाज कट होता है. So lattice enthalpy or lattice energy. Okay. Energy released. Energy released when 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound is formed from its constituent isolated gaseous ions is called as lattice enthalpy और एनर्जी. ये एक डेफिनेशन है. दूसरा डेफिनेशन है, ये ना सब थर्मोडायनेमिक्स वाले कंसेप्ट है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में आता है. नेक्स्ट डेफिनेशन है हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन. ओके. heat absorbed or evolved. यहां पे ध्यान रखना, हीट रिलीज है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ नहीं है. यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवॉल्व भी हो सकती है. हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 mole of any compound, 1 mole of any compound is formed from its constituent elements which are in pure and stable form. Pure and stable form. Okay. Is called as heat of formation. Heat of formation. उसको ना ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं लैटिस एंथैल्पी. ओके. और क्या देखा हम लोगों ने? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आई एम नॉट गिविंग यू दिस डेफिनेशन, मैं जस्ट बता रहा हूं. द एंथैल्पी चेंज और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from outermost orbit of an isolated gaseous atom. Then electron gain enthalpy, the energy released when an electron is added in the outermost orbit of an isolated gaseous atom. तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये
हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पर ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब ये कन्वेंशन है, जब एनर्जी रिलीज होता है ना तो उसको हम लोग नेगेटिव से एक्सप्रेस करते हैं, और जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उसको पॉजिटिव से एक्सप्रेस करते हैं। दिस कन्वेंशन वाज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने ये कन्वेंशंस देके रखे। इज दैट क्लियर? यस। तो ना कोई भी सिस्टम है, आइदर हिट एब्जॉर्ब होगा या इवॉल्व होगा। अगर वो इवॉल्व हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं, तो उसको नेगेटिव लिखते समय, पेपर पे लिखते समय, हाँ वो नेगेटिव दिखेगा नहीं ना, मैग्नीट्यूड है ना वो। ठीक है, चलो अभी हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी ये लिख लिया सब लोगों ने? चलो हम लोग कैलकुलेशन पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थोड़ा इसको नेक्स्ट टाइम ये पढ़ना, रीड करना, समझ में आया? जो मैं नोट्स तुम लोग को दे रहा हूं उसको ही रीड करना फिलहाल। तो डोंट रीड टेक्स्ट बुक नाउ, ओके? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डोंट रीड टेक्स्ट बुक। अभी सिर्फ जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं उसको ही पढ़ना, ठीक है? यस, ओके। तो हियर वी स्टॉप फॉर टुडे। आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री का टेस्ट है, नेक्स्ट मंडे को रेडॉक्स रिएक्शन का टेस्ट रहेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट मंडे को, उसके नेक्स्ट मंडे टेस्ट नहीं रहेगा, छुट्टी है ना तुम लोग को। बात किया ना थीटे सर से? नहीं सर, बात करो ना आप। नहीं तुम लोग बात करो। मेरे को सर ने बोला 13 से 16, अभी उससे ज्यादा चाहिए तो बच्चों को बोलो मेरे से बात करो। तो तुम लोग बात कर लो, ओके? Chalo, bye bye. Those who have a Bye doubt, sir, thank you sir. yes, those who have a doubt, stay with me. Those who do not, homework complete karna. Bye sir, thank you sir. Bye bye. Bye bye. Bye sir, thank you.